Assalamualaikum. In this class we will start with binary arithmetic, and in arithmetic we will have addition, subtraction, multiplication and division. Firstly, let's start with addition. In addition we have some certain rules. Let's go over them first. अगर हमारे पास 0 हो और साथ में हम 0 को ऐड करें, we will get 0. ये हमारा सम आ जाएगा और हमारे पास कोई भी कैरी नहीं आएगा, तो मैं लिख नहीं रही. इसलिए अगर हम लोग 0 को 1 में ऐड करेंगे we will get 1. अगर हम 1 को 0 में ऐड करेंगे we will also get 1 and with no carry. But if we add 1 plus 1 we will get 0 as sum, but we will have a carry as well which will be 1. But what will happen अगर हमारे पास 1 plus 1 plus 1 हो, इस सिनेरियो में क्या होगा? Let's look at example और फिर उससे बताती हूँ. तो इट विल बी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं 110 प्लस 111, तो इट विल बी 0 प्लस 1 विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 0 विथ कैरी 1. कैरी ऊपर चला गया. ये 110 क्यों आता है? क्योंकि बेसिकली 1 हमारा 1 होता है. 1 प्लस 1 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 2 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो वो 10 होता है. तो 0 नीचे आ जाता है, 1 ऊपर आ जाता है. 1 प्लस 1 it will be, sum will be 1 and carry will also be 1. तो हम लोग 1 यहाँ लिखेंगे और 1 एक कैरी चला जाएगा जो कि 1 यहाँ पर आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू डू दिस. अगर हम लोग इसको अगर हम लोग देखें बाइनरी में, तो ये 1 प्लस 1 बेसिकली 3 हो गया, और 3 अगर को बाइनरी में किया जाए तो वो 11 बन जाता है. 11 बन जाता है 1 1, तो 1 इधर और 1 ऊपर. ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड. यू कैन ऑल्सो चेक इट थ्रू. अगर हम लोग इसके ऊपर वैल्यूज दे दें 1 2 4 एंड लेट्स से 8, सो 4 प्लस 2 इज़ 6, 4 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 7 and 8 plus 4 is and then it will be 13. 6 plus 7 is also 13. So you can testify that this is correct. You can also do some other example. Let's take one more example to solidify this concept. Let's say you have 0 0 1 1 0 1 0 and you have 0 0 0, and for example 1 1 0 0. So what will happen here is that 0 plus 0 will be 0, 1 plus 0 will be 1, 0 plus 1 will be 1, 1 plus 1 will be 0 with carry 1, 1 plus 1 will be 0 with carry 1. Okay, it will be 1 plus 0, 0 plus 0 will be 0, 1 plus 0 will be 1, and then 1 plus 0 will be 1, 0 plus 0 will be 0. You can also check it out using this again. 1 2 4 8 16 32 and like 64. Okay, so this is going to be 8 plus 16, that will be, and 2, that will be 26, and this is going to be 12, and when you add 26 plus 12 you get 38, and this is 38 as well. Let's look at subtraction. There are some certain rules for subtraction as well. For example, if you are deducting 0, then from 0 you will get 0. If you are deducting 1 from 1, that will be 0. If you are deducting 1 minus 0, you will get 1. But what if you will do 0 minus 1? According to mathematical algebra, it should be minus 1, but it is not minus 1. It is 1 with borrow 1. It's similar to how the situation here. अब बस यहाँ पर इसलिए ये 1 आएगा क्योंकि हमारे पास बाइनरी में माइनस नहीं होता. We only have positive. Okay, let's look at one example. For example, you have 1 0 1 0 0 1 0, and you need to minus it with 1 1 1 1 1 and 1, for example. Now you are subtracting it. 0 minus 1, it will be 1 with borrow 1, 1
with borrow 1. For borrow I'll just do -1 in here. 1 minus 1 is going to be 0 and then 0 minus 1 will be 1. 1 minus 1 will be 0. यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है. अब बस 0 के नीचे 0 minus 1 है. 0 minus 1 है तो ये क्या हो गया, 1 नीचे और फिर साथ में एक borrow 1. उसके बाद 0 minus 1 will be 1 with borrow 1. दोबारा से आप इसके ऊपर 0 minus 1 जो था borrow 1 लग गया तो यहाँ पे 1 आ गया. दिमाग में 0 minus 1, यहाँ पे 1. अब 1 minus 1 क्या है, 0. यहाँ पे 0 लगेगा. सिमिलरली अब 0 minus 1 will be 1 with borrow 1. यहाँ पे -1 borrow लगा दिया और यहाँ पे 1 है. अब 1 minus 1 जो है वो है 0. 1 minus 1 will be 0 and 0 minus 1 will be 1 with borrow 1. 1 इधर borrow हो जाएगा, 1 नीचे आंसर आ जाएगा. 0 minus 1 will be 1 with borrow -1. borrow पहले लगा लिया और 1 minus 1 जो किया तो हमारे पास 0 आ गया और 1 minus 1 जो है ये हमारे पास 0 आ गया. So this is how we will do this question as well. अब अगर हम लोग इसके ऊपर अगर मार्क करें, यू कैन ऑल्सो चेक इट थ्रू दिस डेसिमल में करके कि किस तरह से इसका आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास आ रहा है, ठीक है. तो दिस विल बी 0 0 1 0 एंड देन 0 1 1. लेट्स डू multiplication. Even for multiplication we have some certain rules. For example, 0 into 0, we all know it's going to be 0. Anything with 0 has to be 0. 0 into 1 will be 0. 1 into 0 will be 0. 1 into 1 will be 1. Okay, let's do some multiplication based on it, and we can do it over here. Okay, let's say you have 1 1 0 1 and you are multiplying it with 1 1 0. 1 0 will be 0. 0 0 will be 0. 0 1 are 0. 0 into 1 will be 0. And then you will put cross because this portion has been used up. 1 into 1 will be 1. 1 into 0 will be 0. 1 into 1 will be 1. 1 into 1 will be 1. And then you will put two crosses. 1 into 1 will be 1. 1 into 0 will be 1. 1 into 1 will be 1. 1 into 1 will be 1. And then you will add up. You will treat these crosses as 0 or as nothing else. 0 plus 1 plus nothing will be 1. 0 plus 0 plus 1 will be 1. 0 plus 1 plus 1 plus 0. 0 plus 1 will be 1. 1 plus 0 will be 1. You will be following the same rule as we did in addition. 1 plus 1 will be 0 with carry 1, and then 1 plus 1 will be 1 0. So this will be the final answer of multiplication, and that's how you do multiplication in it. Lastly, we are going to do and go for division. And for division we do something like, for example, there are no certain particular rules in it. You are just going to follow a long division, or it is also called long procedural division primarily. तो अब हम लोग for example लेते हैं 1 0 1 1 0 1 and we are going to divide it by 110, let's say. Okay, so now you can see 110 जो है हमने इसको as a number treat करना है. When we will treat it as a number, we can see कि ये यहाँ पर directly जो है वो divide नहीं होगा, right? तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे होंगे, हम लोग फर्स्ट वाली डिजिट जो है उसको 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 1 0 1 से तो नहीं ना हो सकता, तो ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास 0 फिर 0 हम नीचे लेके जाते हैं. 110 क्या 10 से है? नो, 0. तो यहाँ पर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा. क्या 110 1 0 1 से छोटे? नो, वी विल स्टिल हैव वन मोर 0 and it will be, sorry, not this, 0 1 0 1 and we will have this one followed up. Now we have 1 0 1 1. For this now we can do something. इसके लिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ 1 लगाएंगे. जब हम लोग उसको नीचे यहाँ 1 लगाएंगे, we will have
1 0 1 मैं नीचे लिख गई हूँ. ओके, नाउ वी हैव 1 0 1 1. अब हम लोग जब इसको 1 से करते हैं, वी विल हैव 1 10 subtracted. 1 minus 0 will be 1, 1 minus 1 will be 0, and 0 minus 1 is, we know that 0 minus 1 is 0. 0 minus 1 is 1 with borrow 1, 1 with borrow 1. 1 minus 1 will be 0. So it is going to be 1 0 1 0. Now we are going to pull this one, like you are going to just drag it, because 1 10 जो है वो से छोटा है. So you can also do one more step. इस तरह से it will be 1 0 1 0 और ये 1 0 1 0 आ जाएगा. Now we are going to put one more 1, because ये 1 10 उसके अंडर आ रहा है. And when you will do this, you will write 1 1 0 here. 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 0 minus 1 is 1 with borrow 1, and 1 minus 1 is 0. Now you have 0 1 1 0, and after that you are going to pull this last one over here, because 100 फिर वो छोटा हो गया, 110 फिर बड़ा हो गया. ठीक है. So you will have a 0 here, you will have now 1 here. Okay, and now you're going to divide it with 110 minus subtracted. ठीक है, तो हमारे पास 1 एक ऊपर आ गया. 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 will be borrowed 1, 0 minus 1 will be borrowed minus 1, and then 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, and you will get 0 0 1 1 so far. But now you have to take one more 0 into it. हमें इसको एक और यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होगी. फॉर दैट वी विल इंट्रोड्यूस आवर ओन 0, या फिर एक और 0 लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे. नाउ वी सी 1 10 1 आएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं. सो वी विल हैव 1 10 ओवर हियर, and 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, and 1 minus 1 is also 0, and 0 0. So we finally have our remainder as 0. So this is going to be our final answer for this one. You can either write it like this, or you can also simply ignore the non-significant zeros and write it like this. So this is how you do all the binary arithmetic.